बस चलने दो। कल की वो खोली है वर्ड 9 तारीख की, ठीक है। Okay, so hello everybody, good afternoon and welcome back to the EduphoreIAS, the Hindu analysis class. Today, the date is 10th of August. We are starting this class as usually we do actually. So we'll be starting first the yesterday's question that we were going to discuss, fine, 9th of August from our editorial discussions and our Hindu analysis. And after that, we'll discuss Hindu, fine, in detail, and then further we'll see questions from today's Hindu itself. And that would be your homework that you need to solve for tomorrow. ठीक है, चलो. So quickly, first question for the prelims. First question is, okay, it is related to first question. Consider the following statements. The CHIPS Act of Russia aims to boost semiconductor manufacturing. Statement 1 is wrong. Why so? Because the article that we actually discussed in detail, that was related to the American CHIPS policy or the act, and where the authors were talking about what lessons that India can learn in its execution of its own semiconductor policy. Fine. So it wasn't Russia, but it is US. Therefore, statement 1 is incorrect. Fine. Second statement, India's semiconductor mission is being managed by the CDAC. Now, this statement itself is not, you can say, correct, in the sense that India's semiconductor mission is altogether a separate entity. It's a non-profit entity under the heads of MITI, that is Ministry of Electronics and Information Technology itself, which has been given or entrusted the responsibility of managing this production, management and design related to the semiconductor. So this is, CDAC is looking after something else and not after this. Semiconductor mission is itself a entity, you can say non-profit entity under the ministry itself, which is looking after the manufacturing, design, assembly and all of these of related to semiconductor industrial policy of India. Okay, so our mission is not this, but this is an entity. Remember, policy is semiconductor industrial policy. Okay, so second is even wrong. So in this case, correct answer क्या है? Neither 1 nor 2. At times such kind of questions are being asked. Remember, it's not like कि हमेशा आपको आंसर करेक्ट ही दिया होगा. आपको दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता, इस चीज का ध्यान रखना. ठीक है, though it comes under moderate to difficult type of question, because generally it is intended that such kind of options won't be given जहाँ पे दोनों ही यहाँ पे गलत हो जाए. ठीक है, बट होता है ऐसा. Next question is, critically examine the recently passed जन विश्वास बिल 2023. So जन विश्वास बिल को हमने डिटेल में डिस्कस किया था एंड उसी से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन था. सो आई होप कि आप सब लोगों ने इसको जरूर लिखा होगा एंड उसी फॉर्मेट में IBC, दैट इज इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, जो एक फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं आंसर राइटिंग के लिए. ठीक है, सो सिंस दिस क्वेश्चन वाज फॉर 10 मार्क्स, आपकी जो इंट्रोडक्शन है वो 2 से 3 लाइन में होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं. 3 से और 4 से 5 लाइन आप यूज कर सकते हो फॉर इंट्रो फॉर 15 मार्क का क्वेश्चन. ठीक है, 2, 3 मैक्सिमम 4 तक जा सकते हो, बट बेटर की हैव जस्ट मैक्सिमम ऑफ 3 लाइंस इन योर इंट्रो फॉर 10 मार्क का क्वेश्चन. तो जन विश्वास बिल हमने डिस्कस किया था, नॉट जस्ट दिस बिल यस्टरडे, बट हमने एक एडिटोरियल भी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारा जो फोकस है जन विश्वास बिल अमेंड करने का वो ये कि हम ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंश्योर करना चाहते हैं. बट जो क्रिटिक्स हैं वो एक्चुअली इसको कह रहे हैं कि नहीं, गवर्नमेंट जो कर रही है वो ठीक नहीं है. सो इसके प्रोज एंड कॉन्स को भी हमने डिस्कस किया था. तो जन, हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस दिस, द जन विश्वास amendment bill 2023 proposed to
अमेंड 183 प्रोविजंस। अगर नहीं भी इतना याद रहे तो सारा लिखने की जरूरत नहीं है, फिगर्स आप थोड़े वो स्किप कर सकते हो। दिस हैज बीन प्रोविजन टू बी टू डिक्रिमिनलाइज इन 42 सेंट्रल एक्ट्स एडमिनिस्ट्रेड बाय 19 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। ठीक है, सो हमने डिस्कस किया था कि इसमें जो पेनल्टीज है वो बढ़ाई गई है, जो क्रिमिनल नेचर की जो जेल टर्म्स हो सकती थी उसको कम की गई है। ठीक है, पनिशमेंट के सेंस में पेनल्टी जो है उसको इंक्रीज की गई है। ठीक है, so that's how government can ensure ease of doing business. Fine. Among these, the changes proposed to the drugs and cosmetic acts as well. इसमें हमने different acts discuss किए थे. For example, drugs and cosmetics act 1940. उसके बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। नाउ योर क्वेश्चन वुड बी कि हम इनकी क्यों बात करें, क्योंकि ये चेंजेस जो है 19 मिनिस्ट्रीज के क्रॉस आ रही है। ठीक है, सो इसलिए डिफरेंट मिनिस्ट्री डिफरेंट एक्ट्स को रेगुलेट करती है, सीधी सी बात है, इसलिए इनमें भी चेंजेस लाई गई है। ठीक है, सो दीज आर द चेंजेस बीइंग ब्रॉट अंडर वेरियस एक्ट्स। द एक्ट एक्चुअली रेगुलेट्स द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन and sale of drugs and cosmetics in the country, that is Drugs and Cosmetics Act 1940. Next act था हमारा Food and Safety and Standards Act, ठीक है, 2006, and then Pharmacy Act 1948. So इन सब में भी changes लाई गई है for the ease of living and ease of doing business. But activists fear, or the critics fear, that the government under the guise of ease of doing business, ठीक है, have proposed the amendments which seek to dilute the punishment by doing away with prize or with penalties. ठीक है, कि गवर्नमेंट ने पनिशमेंट कम करके पेनल्टीज बढ़ा दी है, मींस मॉनेटरी पेनल्टीज बढ़ाई है, जेल टर्म्स या उस तरह की। यहाँ पे क्वेश्चन ये थी कि अगर किसी ड्रग का साइड इफेक्ट अगर किसी लेटर से जनता पे पड़ता है, ठीक है, नेगेटिवली अगर उसकी डेथ हो जाती है, देन हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल? Will this monetary penalty would be suffice or sufficient to, or would be worth the lives actually that have been lost because of the use of the drug? Fine. So this was the critics' point of view. So that's how you need to be neutral again in your explanation. Give both pros and cons that we have discussed in this article, and then conclude finally with your conclusion. This concluding remarks, but try to be a little bit of affirmative in your tones when you are concluding your answer. It should not be like you are totally with the critics, ठीक है, because you are going to be a bureaucrat, and therefore your job is to, point out the problems and then prescribe the policies as well, give the solutions as well. Fine. So that's it as far as yesterday's questions are concerned. Now let us start with the today's Hindu itself. तो आज ये फ्रंट पेज से क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है क्विकली हम देख लेते हैं, बिकॉज दिस गिव्स अस आइडिया कि हमें अंदर के पेजेस पे क्या डिस्कस करना है आज एडिशन से। ठीक है, तो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में क्या हो रहा है उसमें जाने की जरूरत नहीं है। हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने अपील की है कि पीस इन मणिपुर जो है वो बनाए रखी जाए। ठीक है, एंड करंट जो सीएम है जिनको हटाने की बात कर रही है, अपोजिशन डिमांड कर रहा है, उसको इनफैक्ट होम मिनिस्टर ने बैक किया है उनको। ठीक है, तो कोई ऐसी खतरा नहीं है कि सीएम जा सकते हैं अभी। उसके बाद अगर देखोगे तो पॉलिटिक्स नहीं चल रही इधर, सो लेट अस नॉट वेस्ट टाइम हियर। हाँ, एक राघव चड्ढा जी हैं, ठीक है, आप लोगों ने काफी सुना होगा, काफी चर्चित व्यक्ति हैं। इन्होंने कुछ एक प्रिविलेज होती है कि आप एज अ एमपी, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कुछ प्रिविलेजेस होती हैं आपको कि आप सपोज कुछ वो नहीं करोगे, जो हियरिंग चल रही है उसमें सपोज आप बाधा नहीं बनोगे या कुछ ऐसी बातें नहीं करोगे जो किसी के डिफॉर्मेशन के स्टांस बन जाए, या एन नंबर ऑफ इनके पास प्रिविलेजेस होती है। सपोज इनको कोई ड्यूरिंग द सेशन पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, सो दे हैव, द एमपीज हैव लॉट्स ऑफ, यू कैन से, प्रिविलेजेस। इसमें हुआ क्या कि अभी जो एक बिल पास की गई, आप लोगों को पता होगा, दिल्ली से रिलेटेड, जिसको हम बात भी करी है हमने, रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन दिल्ली, उसमें सपोर्ट गार्नर करने के लिए 4 से 5 ऐसे एमपीज हैं अपोजिशन पार्टीज के जिसकी की फॉर्जरी का आरोप लगा है राघव चड्ढा जी के ऊपर कि इन्होंने गलत तरीके से उनकी सिग्नेचर्स कराए या कर दिए खुद से। तो इसमें प्रिविलेज जो राज्यसभा की कमिटी है, इट इज गोइंग टू प्रूव कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर चड्ढा, आप एमपी। ठीक है, सो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रिविलेज कमिटी, what are the privileges of an MP? ठीक है, so these are important for us, that is polity part and not the politics part. ठीक है, so that much that we can take away from this.
ओके, नेक्स्ट, डेवलप इंडिजिनस वेब ब्राउजर, ग्रैब कैश प्राइजेस। सो जो सरकार के फोकस है वो ये कि हमारे देश में ही इंडिजिनसली स्वदेशी तौर से ब्राउजर्स की डेवलपमेंट की जाए, ठीक है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, सपोज आपकी डिफरेंट ब्राउजर्स हैं, जैसे क्रोम इज अ काइंड ऑफ ब्राउजर। सो इंडिया का फोकस है कि एंड यू कैन विन प्राइजेस अप टू 3.4 करोड़, ठीक है। सो इट्स अ गुड incentive, you can say. Panel flagged shortage of fertilizers in India. We'll see on page number 12 what the panel has said about this shortage of fertilizers. उसके अलावा और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इस पेज से। चलो क्विकली, सिटी पेज फ्रॉम दिल्ली। सो हमें इस पे टाइम वेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मोर और लेस पॉलिटिक्स सिर्फ है आज के सिटी पेज से, दिल्ली एडिशन है ये इसलिए। एंड आफ्टर दैट 2-3 नेक्स्ट पेजेस विल बी रिलेटेड टू स्टेट्स। सो अगेन इन पे ज़्यादातर आपको मेजॉरिटी आपकी जो खबर होगी वो पॉलिटिक्स रिलेटेड होगी, ठीक है। तो आप स्किपली सेफली आप स्किप कर सकते हो, बट रिमेंबर कि देखना ज़रूरी है, हैव अ क्विक ग्लैंस कि कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो जैसे ये है, अब हम ये समझ के कि स्टेट रिलेटेड है, पॉलिटिक्स होगी, छोड़ सकते थे, बट यू हैव सम न्यूज़ रिलेटेड टू चंद्रयान 3 इटसेल्फ। ऑर्बिट रिडक्शन मैन्यूवर ऑफ चंद्रयान 3 परफॉर्म्ड। ऑर्बिट रिडक्शन मीन्स कि नाउ चंद्रयान 3 is going to be nearer to the moon and finally it will be making its final landing on the surface of the moon on August 23, the date we are waiting for, ठीक है। तो सॉफ्ट लैंडिंग हमने बात की थी कि हमारा जो टारगेट है सॉफ्ट लैंडिंग कराना है वो साउथ पोलर रीजन ऑफ द मून। सॉफ्ट लैंडिंग में क्या होती है कि स्पीड बिल्कुल ही 0 तक ले जाना पड़ता है, ठीक है, फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ स्पीड, इसलिए इसको हम सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं। एंड रिडक्शन की बात क्यों हो रही है? बिकॉज वी आर नाउ जस्ट, चंद्रयान 3 इज नाउ जस्ट 1437 किलोमीटर अवे फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ द मून, ठीक है, इसलिए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, आई मीन इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि यू जस्ट नीड टू बी अवेयर कि क्या चल रहा है। फाइनल जब सक्सेसफुली ये सरफेस को टच करेगा तो फिर हम ये देखेंगे वहाँ से क्या हमें एविडेंसेस मिलते हैं। चेंज स्टेट्स नेम टू केरलम, असेंबली रेजोल्यूशन अर्जी सेंटर। सो जो रूल 18 है, ठीक है, लेजिस्लेशन की 108 रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द केरला लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके थ्रू केरला की असेंबली ने रिक्वेस्ट किया सेंटर को कि क्योंकि अल्टीमेटली जो नेम चेंज करने की, बाउंड्री चेंज करने की जो अथॉरिटी है इंडिया में वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, रिमेंबर स्टेट्स की। तो इसीलिए चेंज स्टेट्स नेम टू केरलम फ्रॉम केरला, असेंबली जो है केरला की असेंबली उसने रेजोल्यूशन पास करके सेंटर से अर्ज किया है, ठीक है। Because this is related to the Article 3 of the Constitution, where it has been mentioned that the name of a state can be changed. See, Article 3 deals with the formation of new states and alteration of areas, boundaries or names. ठीक है, Article 3 deals with this internal changes and Article 3 external. See, जहाँ पे हम new states and alteration of areas कर सकती है, but this all together lies in the, this is the power of the parliament and of the states. इसीलिए केरला की सरकार ने अर्ज किया है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन कर्नाटका गोज अप बाय 364 फ्रॉम लास्ट काउंट, ह्यूज काउंट, आई मीन इंक्रीमेंट, 6395 टोटल। सो प्रोजेक्ट एलिफेंट, थोड़े दिन पहले हमने प्रोजेक्ट टाइगर्स भी देखा गया था कि उसकी भी जो सर्वे है, जो रिपोर्ट है, हमें नंबर ऑफ टाइगर्स काफी बढ़ते हुए नजर आए थे, ठीक है। एंड एमपी इज द लीडर इन मोस्ट नंबर ऑफ दिस टाइगर्स इन इंडिया। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर टोटल नंबर टच जो है वो 6395 एलिफेंट्स इंडिया में, जिसमें कि हाईएस्ट जो है कहाँ पे है? कर्नाटका। फाइन, द नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन कर्नाटका हैज इंक्रीज्ड बाय 346 फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 6049 टू दिस मच नाउ, व्हिच इज द हाईएस्ट इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू एन इंटरिम रिपोर्ट ऑन एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक एस्टिमेट्स। तो सिर्फ कर्नाटका की बात हो रही है कि इतनी अभी पॉपुलेशन जो है कर्नाटका में 6395 वो है 364 से बढ़ के, ठीक है, पहले 6049 थी। सो हाईएस्ट पॉपुलेशन है इन कंट्री कर्नाटका में, इतना ध्यान रखना। लास्ट जो सेंसस हुई थी वो 2017 में हुई थी, उससे पहले 12 में, हर 5 साल के बाद। ये 2022 की है रिपोर्ट, 2023 में, ठीक है। इसमें से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टाइगर रिजर्व है। सपोज बांदीपुर टाइगर रिजर्व with 116 elephants accounted for the highest density of 0.96%, followed by the Nagarhole Tiger Reserve.
सो ये दोनों ही बांदीपुर एंड नागरहोल टाइगर रिजर्व जो आपके हैं कहाँ पे हैं, इन कर्नाटका। फाइनली हम एडिटोरियल पेज पे आ गए हैं। एडिटोरियल पेज से इंपॉर्टेंट क्या है, तो द 70 शोज दैट 70s शो। तो यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं, कौन सी शो की बात कर रहे हैं, सिनेमा हॉल? नो, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट, हुआ क्या था कि अगस्त 3 को मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसने एक रेजोल्यूशन पास की, ठीक है, एंड उसमें ये कहा गया कि जो पीसीज हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड ऑल दैट, दिस शुड बी बैंड, इन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी, स्पेशली इंपोर्ट्स पे, जो सपोज डेल है, एप्पल है एंड ऑल दिस, जिनकी मेजरली नंबर 1 पे हमने डिस्कस भी किया था एडिटोरियल के, उसमें फिगर के थ्रू भी हमने देखा था डाटा फैक्ट्स कि चाइना हाईएस्ट जो है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सच पीसीज हैं, लैपटॉप है इन इंडिया। सो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट को सिक्योरिटी रीजंस भी है, क्योंकि चाइना से हमारे रिलेशंस ठीक नहीं चल रहे हैं। पहले भी देखा होगा आपने कि इंडिया ने ऑपरेशन डिजिटल ये एप्लीकेशंस की थी, ठीक है, जहां पे काफी सारे चाइनीज ऐप जो हैं वो हटा दिए गए थे, ठीक है, उसमें से टिकटॉक भी एक था, ठीक है। सो हुआ क्या कि अगस्त 3 की इस जो रेजोल्यूशन थी, जो ऑर्डर थी इस मिनिस्ट्री की, उसको इमीडिएट इफेक्ट के साथ इंप्लीमेंट करना था। बट इशू कहां पे आ गई कि जो शिपमेंट है, जो इन ट्रांजिट है, कि जो रास्ते में है, सपोज किसी कंट्री ने एक्सपोर्ट कर दिया एंड ऑन द वे है टू इंडिया, ठीक है, सो उनका क्या? तो देयरफॉर इसके लिए मिनिस्ट्री ने ये कहा कि हमारा जो पर्पस है वो है इंपोर्ट लाइसेंसेस इशू करना एंड टू नज द or nudge such companies, actually the foreign companies like Dell and all, to make in India, to produce these laptops or PCs in India itself, ठीक है, under production link incentive, PLI जो स्कीम गवर्नमेंट रन कर रही है, ठीक है। सो नो डाउट ऑब्जेक्टिव्स अच्छे हैं, बट समवेयर इन दिस आर्टिकल this has been labeled as a major blunder, you can say, because this is something which is pushing India back in the 1970s. Why? क्योंकि उस टाइम पे लाइसेंस काइंड ऑफ राज चलती थी, वहां पे भी लाइसेंसिंग की इशू है, तो उससे इस आर्टिकल को कोरिलेट किया गया है, ठीक है। दिस इज अबाउट लाइसेंस राज। सो इट हैज बीन रिटन हियर दैट minister asserted that this was not a return to the license raj, but it seems that government has now made it mandatory on the part of importers to get license, so somewhere it reflects the what return of the license raj, which is not good for India, for any country, let us say, in the age of globalization. But of course a sovereign country is independent to take such measures, ठीक है। Even if import licenses will be issued in minutes as indicated, the entire spectacle is a hark back to the early days of India's IT industry. Hark back means going back, ठीक है, or evoking those times policies, you can say, that was gradually freed up through 1970s and 1980s, and industry players are likely to remain on edge till the license criteria become clear, ठीक है। सो अभी जो इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं, जो इंडस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है, ठीक है। Now, would importers need to justify imports of cutting edge devices, or a software firm need to submit proof of new hires or fresh export orders to secure licenses? These are the questions. If PC and tablet imports, which fell almost 28% in 2020-2023 financial year, $5 to $5.3 billion, are causing security fears because many come from China, the government can mandate testing norms to verify shipments. This is one of the solution. टोटल जो हमारी इंपोर्ट है वो 5.3 बिलियन वर्थ की हुई है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, इट्स काइंड ऑफ माइन्यूट इन ओवरऑल ट्रेड की बात करें वॉल्यूम की। तो अगर इंडिया को, गवर्नमेंट को लगता है कि इट इज कॉजिंग इनसिक्योरिटी फियर्स, तो देयरफॉर गवर्नमेंट कैन मैंडेट टेस्टिंग नॉर्म्स टू वेरीफाई द शिपमेंट्स, लाइक एक रूल्स ऑफ ओरिजिन की पहले बात होती थी कि कहां से प्रोडक्ट ओरिजिन हो रहा है। सो इस तरह की फ्रेमवर्क है जो वो गवर्नमेंट यूज कर सकती है इंस्टेड ऑफ कमिंग विथ सच काइंड ऑफ ऑर्डर्स। If the intent is to spur investment, it is difficult to bully global majors into committing large outlays at virtual gunpoint when they have the other easier to do business alternatives around the world. So yes, here it has been mentioned that such kind of mandatory import licenses can pose not or go against the ease of doing business, and therefore the investors would rather try to prefer some alternative destinations or the other countries where they can easily do business fine without having such kind of mandatory licensing.
Okay, so any increase in cost or limitations on device option would also imply collateral damage for India's consumers. Why so? क्योंकि पोस्ट कोविड रिकवरी अगर आप देखो तो नाउ वी आर लिविंग इन द एज ऑफ डिजिटलाइजेशन, ठीक है। गवर्नमेंट की मेनी ऑफ द स्कीम्स हैं वो डिजिटलाइजेशन और डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट कर रही हैं। इसकी एक्सेसिबिलिटी के लिए जरूरी है कि लैपटॉप्स एंड पीसी हो लोगों के पास, ठीक है। या हमें पोस्ट ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई सब कुछ, तो हमें देखने को मिला कि दूर दराज के गाँव में जो गरीब जनता है या जो बच्चे जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वहां तक एजुकेशन जो है वो नहीं पहुंच पाई, ठीक है। सो इन सबको देखते हुए कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव इमेज एक जो है वो बना रही है, इस ऑर्डर के थ्रू गवर्नमेंट ने पोर्ट्रे किया है। For many households and small enterprises, this is not just about crossing the digital divide, but also access to government services increasingly going online in a digital India. Taken together with some recent policy ploys, such as the 28% GST on gaming bets, the freeze in prices of regulated petroleum products, this development makes for an ominous flashback for investors. Ominous क्या होता है? Worryingly concerned that something bad is going to happen in future. ठीक है? Unpredictable policies, excessive taxation, and return to maximum government can derail India's reform story. So these are the three issues which has been underlined in this article. Which are these three? Unpredictable policies. ठीक है? Second is taxation related, that is excessive taxation, and third, return to maximum government, because the motto of this government current establishment is minimum government, maximum governance. ठीक है? Not to forget that. So therefore, these three factors can somewhere derail India's reform story that we actually opened up our markets post 1991 economic reforms. ठीक है? So smaller but an impactful article. एडिटोरियल पेज से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज के लिए वो ये, हम इसको डिस्कस करेंगे. Now, first of all, let me give you the brief about this article, what is all about. So, stop the fence sitting in cluster bomb use. आप आइडिया समझ गए होंगे क्लस्टर बॉम्ब यूज, कि जो फेंस पे बैठा है, ठीक है, मजे ले रहा है बैठ के, जो भी कंट्रीज हैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू नेशंस, कि कहीं ना कहीं उन सबको पार्टिसिपेट करके साथ में मिलके क्लस्टर बॉम्ब जो म्यूनिशंस हैं या जो बॉम्ब हैं जो यूज हो रही है यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में, उसको रोकने की जरूरत है. फाइन. नाउ क्लस्टर बॉम्ब्स क्या होती हैं, म्यूनिशंस क्या होती हैं, उस पर हम आते हैं. ठीक है, उससे पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में दे दूं. यूक्रेन रशिया की कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही है, हमने कितनी बार पता नहीं डिस्कस किया इस चीज को. ठीक है, सो उसमें क्या है कि ओवर द टाइम, इस टाइम पे अभी भी ऑनगोइंग प्रोसेस है इन कॉन्फ्लिक्ट, एंड इसमें क्या है कि रशिया ने इनिशियली जो मेंशन है इस आर्टिकल में, कि राइटर ने कहा कि इनिशियली रशिया ने यूज किया, ठीक है, म्यूनिशन बॉम्ब्स और दिस क्लस्टर म्यूनिशंस और क्लस्टर बॉम्ब्स. हुआ क्या उसके बाद, आज के डेट में क्या प्रेजेंट सिनेरियो क्या है कि ये कि अब जो यूएस है वो यूक्रेन को क्लस्टर बॉम्ब सप्लाई कर रहा है, एंड नाउ यूक्रेन इज एक्चुअली यूजिंग सच काइंड ऑफ क्लस्टर म्यूनिशंस और बॉम्ब्स अगेंस्ट रशिया. इसका फॉल आउट क्या है? इसका फॉल आउट ये है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ मिलिट्री लेवल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सिविलियन पॉपुलेशंस भी हैं, एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव बीन डाइड टिल नाउ इन सच काइंड ऑफ अटैक्स. ठीक है, नाउ व्हाट आर द स्पेसिफिसिटी, टेक्निकलिटीज क्या है इसके रिलेटेड. तो सी the decisions by the United States to send cluster munitions to Ukraine as a part of new military aid package to bolster Kyiv is Ukraine's capital. War efforts against Russia has raked up controversy. Cluster munitions होती क्या है सबसे पहले? So cluster munitions or cluster bombs are weapons that release multiple explosive submunitions, also called bomblets. Multiple smaller fragments, let us say, of explosives. ठीक है, we call them bomblets into the air. Now these submunitions explode as soon as they hit the ground, killing and maiming people in the area. But many bomblets do not blow up instantly and remain dormant for years. Means they are like what? They are like, जो आप देखते हो कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है, जो ये अटैक्स होती रहती हैं, तो वहां पे क्या है कि बहुत टाइम के बाद ये ब्लो अप कर रही हैं. इसकी वजह से क्या होता है कि सिविलियन पॉपुलेशन भी काफी अंडर दिस थ्रेट आ जाती है. ठीक है, क्योंकि सारी इमीडिएटली ब्लोन अप नहीं हो रही हैं जितने भी क्लस्टर बॉम्बलेट्स हैं. ठीक है, देयरफॉर
Many bombnets do not blow up instantly and remain dormant for years, also known as the dud rate. Now, what is dud rate? So, dud rate is the rate of chances of instant blowing. तो जो रशियन की केस में क्लस्टर बॉम्ब्स हैं उसकी जो डड रेट है दैट इज 40%, मींस आउट ऑफ 100 14 bombnets are such which do not blow up instantly and remain dormant for years. But for US, this ratio is just in the range of somewhat around 4%. मींस 100 में से सिर्फ 4 ही बॉम्ब्स हैं यूएस के जो फेल्ड होते हैं या जो लेटर ऑन कुछ टाइम के बाद एक्सप्लोड होते हैं. ठीक है, सो यू कैन सी, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द डड रेट. Now these inactive bomblets act as a precarious land mines. आप देखते हो इंडिया में छत्तीसगढ़ साइड एंड ऑल, वहां पे हमारे जो जवान शहीद होते हैं कई बारी नक्सल जो नक्सलाइट्स हैं वो लैंड माइंस यूज करते हैं कि जमीन पे अंदर माइंस बिछा देते हैं एंड सडन अटैक होता है जिसमें कि इतनी ज्यादा एक्सप्लोजिव होती है कि उसकी वजह से हमारे जवान शहीद हो जाते हैं. सो दिस बॉम्बलेट्स जो कि नहीं इंस्टेंटेनियसली ब्लो होते हैं, दिस एक्ट्स एज अ लैंड माइंस इन फ्यूचर, posing a grave threat to the civilian population including women and children for long time. Now एक Human Rights Watch करके संस्था है, Human Rights Watch, which is a civil society organization. इसने कहा कि Russia since launching a full-scale invasion of Ukraine has used cluster bombs against Ukrainian cities such as Kharkiv, resulting in hundreds of civilian deaths and damaging. ठीक है, तो रशिया ने सबसे पहले यूज किया. नाउ यूक्रेन इज यूजिंग दिस डेंजरस वेपन विल आल्सो वर्सन द सिचुएशन. क्लस्टर बॉम्ब्स हैव नोटोरियस हिस्ट्री. दे वर यूज्ड इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. ठीक है, सिंस देन क्लस्टर बॉम्ब्स हैव बीन यूज्ड ऑन मल्टीपल ओकेजन्स इंक्लूडिंग बाय द यूएस इन द वॉर्स इन वियतनाम, अफगानिस्तान एंड इराक. So according to cluster munition monitor, anywhere between 56,000 to 86,000 people have died in cluster munition affected countries since 1960s. So you can see the scale, the massive scale at which the people have died due to such use of cluster munitions or the cluster bombs, in the range of 56,000 to 86,000 since the use started in 1960s and first time it was used in the World War II. Enactment of conventions. So do we have some convention, international treaty which actually regulate this cluster munition or cluster bomb? So yes, the answer is yes, and that convention is called Convention on Cluster Munition, CCM. It was enacted in May 2008, not 6, pardon. The enactment of the CCM Convention on Cluster Munition has been a major step in eradicating cluster bombs. However, the treaty is not universal. Why so? Because only 112 countries have acceded to the CCM, including many of the NATO members. NATO अब क्या है इसके बारे में भी बात कर चुके हैं हम काफी. For example, Canada, Germany, France, and United Kingdom. But important countries such as US, Russia, China, Israel, and India have not signed the CCM, and Ukraine is not a member. Issue is here that since they are not member, not even Russia, not US, not Israel are the members, not even India is member of this CCM, Convention on Cluster Munition or Bomb. Therefore, they are not obliging this actually convention. Fine. Article 1 जो है इस convention की, it bans the use, production, stockpiling and transfer of cluster bombs. The convention further obligates countries to destroy existing stockpile of cluster munitions in their possession. Countries are also legally bound to develop a victim assistance program to provide support and rehabilitation to the cluster bomb victims in their jurisdiction. ये सब तो तब ना जब आप मेंबर हो. अगर आप मेंबर ही नहीं हो तो फिर क्या? Countries can say कि we are not signatory to this convention on cluster munition or cluster bomb. So how come we could be made, or we could be obligated to have this kind of mechanism? So therefore, the question is here now. Customary international law. Given that there is such an international treaty, that is CCM, are Russia and Ukraine violating international law by using cluster bombs? This is a question because both of them are not the member or signatory to this convention. Therefore, since these countries are not signatories to the CCM, it is argued that they are not bound by international law banning cluster bombs. But according to the author, this is not correct. International law on armed conflict has always drawn a distinction between combatants and civilian population, that is military and civilian population, and between civilian objects and military objectives.
In this regard, a fundamental customary international law, CIL, customary international law norm applicable to the armed conflict is the prohibition of indiscriminate attacks. कि जो अटैक होगी वो indiscriminate manner में नहीं होगी. Means if the purpose of the objective is to hit the military objective, these objects, then the civilian population would not be used as a shield. ठीक है, और this attack would not be on the civilian population. Means this shall not be an indiscriminate attack. Fine. In other words, an essential canon of international law is that use of force must be discriminate. That is, the force should target specific military objectives and not civilians. Now, this CIL norm जो है, this has been codified under a convention called Geneva Convention. ठीक है, under Protocol 1 to the 1949 Geneva Conventions, to which both Russia and Ukraine are signatories of the members. Now, here is the question. Here is the answer. कि indirectly both of them are the members, but not directly of the CCM. Given the nature of cluster bombs, their usage is classic example of indiscriminate use of force that fails to differentiate between combatants and civilians. Another fundamental international humanitarian law norm relevant here is proportionality. So there are two types of norm here. First is your CIL, and second is your norm of proportionality. Again, it has been codified under Protocol 1 to the 1949 Geneva Convention. In this rule, it prohibits excessive use of force that cause incidental damage to the civilian population or civilian objects when compared to the military benefits anticipated. ठीक है, तो अगर civilian population की damage या chances ये है कि civilian population ज़्यादा इसमें इसके अंदर आएगी, इसके जद में. So ultimately क्या है कि जो damage है और जो incident है to the civilian population should not be more than the military, because ultimately attack जो है वो military पे होना है. ठीक है, given the fact that the use of cluster bombs is inherently indiscriminate, harming civilians, their use will amount to disproportionate use of force and is thus illegal. In sum, even if Russia and Ukraine are not signatory to the CCM, their use of cluster bombs violates international law. Now, what about those who are sitting on the fences, जो कि indirectly इस conflict को और fuel कर रहे हैं? For example, US led Europe led by US. But what about the US now? Arguably, supplying cluster bombs to Ukraine outside of the CCM that Washington has not signed is not a violation of international law. According to the author, supplying of such kind of bombs to Ukraine is not a violation. Okay. Moreover, it is claimed that the US made cluster bombs, unlike the Russians have a low dud rate. Already explained कर चुका हूँ dud rate. That is, the prospects of unexploded bomb rates are slim. Thus, questionably, they meet the requirements of the use of force being proportional and discriminate. Means there has been used more for the military objects and military purpose and not for the civilian purpose. ठीक है? Nonetheless, फिर भी supplying cluster bombs to any country is an irresponsible act. ये तो है ही बात सही. The usage and the possession and transfer or supply of cluster bombs should be banned universally as envisaged in the CCM, that is Convention on Cluster Munition. For this to happen, all United Nations member countries should accede to the CCM and eradicate cluster bombs from the face of the earth. So solution क्या है कि just 112 countries signatory हैं to this Convention on Cluster Munition, but the need of hour is that all the 198 somewhere members of the United Nations come and sign this this convention, and therefore then we can have universal application of the same, and then the countries could be made what responsible for whatever they disproportionate or illegal actions they are taking with respect to the transfers or using of cluster munition or cluster bombs. Fine. So a well balanced article. Do read and revise the same. At least we need to have this idea about what exactly is cluster bombs, cluster munitions. Next article is very, very important, and that is, can SMRs, that is small nuclear modular reactors, help India achieve net zero? Net zero we want to achieve by, our target year is 2070, जो हमने pledge किया है by 2070. ठीक है? So the question यही है कि what are small reactors and can these SMRs in short help India achieve net zero or not? So let us quickly discuss this.
but first some background, some data facts. The world's quest to decarbonize itself is guided, among other things, by the United Sustainable Development Goal 7. So SDG 7 जो है, it talks about to ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. Since the world still depends on fossil fuels for 82% of its energy supply. See, global warming में जो major factor है, that is fossil fuel, but across the world अगर हम बात करें तो still the world is dependent on fossil fuel for almost 82% of its energy needs, and India is even dependent on fossil fuel in the range of somewhere 47 to 48% of its energy needs. Decarbonizing the power sector is critical, just from 47-48% from the coal, remember, in India coming, and that is a major chunk of fossil fuel. ठीक है, not all 47% is equal to the fossil fuel, but just the share of coal. The share of electricity in final energy consumption will also increase by 80 to 150% by 2050. The recent uptick in coal consumption in Europe, despite the increase in solar and wind power, suggests that reliable 24/7 low carbon electricity resources are critical to ensure deep decarbonization of power generation, along with the grid stability and energy security. Now, in this direction, smaller modular reactors, a type of nuclear reactor, can be helpful to India in this regard. So, issue क्या है? अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड ओवर ये बात हो रही है कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए फॉसिल फ्यूल की जो डिपेंडेंसी है वो कम करनी है, स्पेशली कोल, बट हमें कुछ ट्रेंड रिवर्स देखने को मिले हैं कि यूरोपियन कंट्रीज क्या कर रही हैं, इन पर्टिकुलर जर्मनी एंड ऑल, इन्होंने कोल को ज्यादा से ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया, मींस दे आर गोइंग अगेंस्ट देयर ओन प्लेजेस. ठीक है, सो बट क्यों कर रही हैं? उसका रीजन ये है कि जो आपकी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज स्पेशली लेट अस से दिस सोलर एनर्जी एंड ऑल, these are not let us say stable kind of or cannot ensure a stable supply of energy, especially electricity. Fine, and there are lots of issues related to the grid stability भी है, energy security भी है, and power generation भी है. So these are the different factors which are actually important in this direction. ठीक है, इसलिए जो डिपेंडेंसी को कट करने की जरूरत तो है, but this is not that easy. Now, what are the challenges of decarbonization? First and foremost challenge जो है, that is transition from coal-fired power generation to clean energy poses major challenges, and there is a widespread consensus among policymakers in several countries that solar and wind energy alone will not suffice to provide affordable energy for everyone. Fine, so this is a major challenge. According to IEA, International Energy Agency, the demand for critical minerals like lithium, nickel, cobalt, and rare earth elements required for clean energy production technology is likely to increase by up to 3.5 times by 2030. But in critical element, जैसे कि हमने बात की थी, कल भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ मेजर्स लिए हैं विद रिस्पेक्ट टू द क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक दिस एलिमेंट्स. This jump poses several global challenges, including a large capital investment to develop new mines and processing facilities. The environmental and social cost or impacts of developing several new mines and plants in China, Indonesia, Africa, and South America within a short time span, coupled with the fact that the top 3 mineral producing and mineral processing nations control 50 to 100% of the current global extraction and processing capacities, pose geopolitical and other risk. So this is the issue. China, Indonesia and Africa, ये तीन major mineral producing and mineral processing nations हैं, and because of them actually 50 to 100% in the range of this current global extraction processing capacities जो है, these are posing geopolitical risk, fine, or supply chain related risk. So those countries were dependent like us, even on China, we are 100% almost dependent for such critical minerals imports. So again, it's a challenging for us. What are the issues with nuclear power? So nuclear power plants जो हैं generate 10% of the world's electricity and help it avoid 180 billion cubic meters of natural gas demand. So this is therefore called as a renewable source of energy. And हमारे यहाँ भी nuclear reactors हैं. For example, आपने नाम सुना होगा कुंडनकुलम, तारापुर एंड ऑल. सो क्योंकि फोकस है कि उसकी जो शेयर है न्यूक्लियर एनर्जी की वो बढ़ाई जाए, जो बहुत ही कम है इस टाइम पे, अराउंड 2-3% इन द रेंज. Any less nuclear power could make the world's journey towards net zero more challenging and more expensive. तो न्यूक्लियर पावर की जो इंपॉर्टेंस है वो इस डायरेक्शन में है कि नेट जीरो हम हो पाएंगे कि नहीं.
Now NPPs, nuclear power plants, are efficient users of land and their grid integration costs are lower than those associated with variable renewable energy sources because NPPs generate power 24/7 in all kinds of weather. So ये reliability, ये मेजर TRP है आपकी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की कि आप 24/7 रिलायबल एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकते हो इन एनी काइंड ऑफ वेदर दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन काइंड्स ऑफ सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी. तो न्यूक्लियर पावर जो है प्रोवाइड्स वैल्यूएबल को बेनिफिट्स लाइक हाई स्किल जॉब्स इन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस. ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंस. As an alternative, several countries are developing small modular reactors like a small hydroelectric these power projects we have. ठीक है, so उसी लाइन पे कहीं ना कहीं small many countries trying to develop small modular reactors. Nuclear reactors with a maximum capacity of 300 megawatt, to complement conventional NPPs. SMRs can be installed in decommissioned thermal power plant sites by repurposing. So इनके लिए अलग से नहीं, जहां से हम आप थर्मल पावर प्लांट हटा रहे हो बस वहीं लगा सकते हो, बट प्रोवाइडेड दिस शुड बी इन द रेंज ऑफ 300 मेगावाट्स. ठीक है, नॉट मोर देन दैट. सो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज किया जा सकता है, इसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है. दस स्पेयरिंग द होस्ट कंट्री फ्रॉम हैविंग टू एक्वायर मोर लैंड और डिस्प्लेस पीपल बियॉन्ड द एग्जिस्टिंग साइट बाउंड्री. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? SMRs are designed with a smaller core damage frequency, means the likelihood that an accident will damage the nuclear fuel and source term a measure of radioactive contamination compared to conventional NPPs. तो जो चांसेस हैं और लाइकलीहुड है कि एक्सीडेंट होने की जो डैमेज कर देगा न्यूक्लियर इसके कैपेबिलिटी को और न्यूक्लियर फ्यूल को, वो बहुत कम है इस केस में. सेकेंड इज दे ऑल्सो इंक्लूड एनहांस सिस्मिक isolation for more safety. SMRs designs are also simpler than those of conventional NPPs and include several passive safety features as well, resulting in lower potential for the uncontrolled release of radioactive materials into the environment. Fine. So these are all advantages. The amount of spent nuclear fuel stored in an SMR project will also be lower than that in a conventional NPP. Means जो storage cost होगी SMR की वो भी कम होगी compared to the NPPs, nuclear power plants, conventional ones. ठीक है, so these are the benefits or advantages. ठीक है, since SMRs are designed to operate for more than 40 years, another advantage क्या है कि जो इनकी लाइफ टर्म है that is around 40 years. The levelized cost of electricity is $60 to $90 per megawatt hour. So the figure is expected to drop rapidly after 2035 by when the SMRs ordered by a number of East European countries from NewScale and GE Hitachi are expected to come online. So these are the two countries actually which are working in this direction at a larger scale, that is NewScale and GE, General Electric, Hitachi. The cost will decline steeply or be steepest because initially these are the initial phase or the evolutionary phase in SMRs. जैसे जैसे इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ती जाएगी, वाइडर स्केल पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, वैसे वैसे इकोनॉमी ऑफ स्केल हमें देखने को मिलेगा, कॉस्ट कटिंग भी होगी. India, when reputed companies manufactured SMRs, this at least was the reason SMRs were included in the US-India joint statement after Prime Minister Narendra Modi met US President in June 2023. So SMRs जो है, they are also the part of the agreement that took place between India and US. Fine. So ये ध्यान रखना. What is the need for an efficient regulatory or what is the need for an efficient regulatory regime? सीधा सा आंसर है कि एक efficient regulatory regime की जरूरत इसीलिए है so that कि हम जो इंस्टॉलेशन है उसको फास्ट पेस कर सकें. ठीक है, उसकी जो स्पीड है इंस्टॉलेशन की उसको हम बढ़ा सकें एंड क्विकली हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ें. An efficient regulatory regime comparable to that in the civil aviation sector is important if SMRs are to play meaningful role in the decarbonizing the power sector. ठीक है, so these are the essentials requirements. Now how can SMRs be integrated with the national grid? So India की जो Central Electricity Regulatory Authority है projects that the generation capacity of the coal-based thermal power plants in India must be increased to 2,59,000 megawatt by 2032 from the current 2,12,000 megawatt. Means हमारे को सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी की रिकमेंडेशंस ये हैं कि कोल बेस्ड एनर्जी जनरेशन है और बढ़ाओ. ठीक है, in order to meet the requirements while enhancing the generation capacity this much
The CA also projects that TPPs will thermal power plants will provide more than half of the electricity generated in India by 2031-32, while VREs, that is variable renewable energy resources, and NPPs will contribute 35% to 4.5%. So nuclear power plants based energy contribution by 2031-32 is expected to be just in the range of 4.4%. So इसको बढ़ाने के लिए SMRs can be one of the alternatives. Fine. Now what are the legal and regulatory changes required? So the Atomic Energy जो Act है इंडिया की will need to be amended to allow the private sector to set up SMRs to ensure safety, security and safeguards. Control of nuclear fuel and radioactive waste must continue to lie with the government of India. तो एटॉमिक एनर्जी कल भी हमने डिस्कस किया था, जिसके अंडर की गवर्नमेंट ने कुछ क्रूशियल स्ट्रेटेजिक एंड इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स जिस मिनरल्स हैं स्पेशली उसको गवर्नमेंट ने डीलिस्ट किया है. आउट ऑफ 12 6 ही रह गई हैं उसमें. सो एटॉमिक एनर्जी जो एक्सक्लूसिव डोमेन है पीएमओ के अंडर आता है. ठीक है, सो जरूरी है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वहां पे भी प्राइवेट सेक्टर की कहीं ना कहीं जो एंट्री है उसको अमेंडमेंट के थ्रू अलाउ करे. Government will also have to enact a law to create an independent, empowered and regulatory board with expertise and capacity to oversee every stage of the nuclear power generation cycle. हाँ, because no doubt safety तो है, but nuclear power plants के अगर आपकी कुछ दिक्कत आ जाए तो major issues भी create हो सकती है. ठीक है. The security around SMRs must remain under government control, while the nuclear power corporation can operate privately owned SMRs during the hand-holding process. So private जो players हैं वो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसके अंडर ऑपरेट कर सकती है. एंड जो गवर्नमेंट है सिक्योरिटी जो इशू है, ठीक है, रिलेटेड टू एसएमआर, दैट शुड रिमेन इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ओनली. फाइनली फाइनल सजेशन क्या है? द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी मस्ट इंप्रूव द पब्लिक परसेप्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर इन इंडिया by better disseminating comprehensive environmental and public health data of civilian reactors which are operating under international safeguards in India. International safeguards imposed by, remember, IEA, International Atomic Energy Agency, IAEA. ठीक है, जो सुपरवाइज करती है ऑन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अक्रॉस द कंट्रीज, अक्रॉस द ग्लोब. ठीक है, जो भी मेंबर है. न्यूस्कल पावर मॉडल. सो ये जो न्यूस्कल कंपनी है उसकी जो पावर मॉड्यूल है वो इस तरह से है. नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ रिएक्टर कूलेंट फ्लो, इसमें कंडक्शन. ठीक है, उसके बाद कन्वेक्शन, ग्रेविटी की भी यूज है. देन यू हैव न्यूक्लियर कोर यहाँ पे बिगिनिंग में, राइजर, स्टीम जनरेटर, सपोर्ट, देन रिएक्टर वेसल, कंटेनमेंट वेसल एंड फाइनली फीड वाटर लाइन, देन स्टीम लाइन. सो दीज आर द एक्चुअली the you can say how the this process is starting from here core से and then finally ultimately it is ending up steam जो line है means यहाँ से steams जो है वो बाहर निकलेंगे. जब भी हम पावर प्लांट चलाते हैं तो आपने देखा होगा steam फ्लो करती है. ठीक है, सो इसलिए ये जो मॉड्यूल है दिस इज मॉड्यूल ऑफ नस्केल पावर मॉड्यूल. ठीक है, 2 कंपनी जिसकी हमने बात की थी, एक जनरल इलेक्ट्रिक हिताची की एंड एक इसकी जो इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. So quickly let us have look at the other news and facts as well. China goes 10 months without envoy in India. Okay. तो चाइना के अभी कोई परमानेंट एनवॉय नहीं है इंडिया में फ्रॉम लास्ट 10 months. अगेन जो जम्मू कश्मीर रिलेटेड हियरिंग चल रही है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसरिंग चल रही है. ठीक है, सो फाइनल जब जजमेंट आ जाएगी हम बात करेंगे. Okay, what else important? Politics only. राज्यसभा ने अगेन 4 बिल, कल भी हमने देखा था, फिर से 4 बिल्स जो हैं वो पास किए हैं. कौन कौन सी बिल्स हैं ये? कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल, द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, फाइनली इसको पास कर दिया है राज्यसभा ने, एंड द कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल. तो ये 4 बिल्स हैं जो राज्यसभा ने क्लियर कर दिया है फाइनली. ठीक है, इसमें कोई खास डिटेलिंग नहीं है बट विल बी डिस्कसिंग टेकिंग अप दिस बिल्स एंड acts in our current affairs, weekly current affairs classes as well.
To curb price rise, center to release more food grain stock by open market sale, OMSS जिसको हम बोलते हैं, open market sales, open market operation. So प्राइस राइज जो देखने को मिल रही है उसको कर्व करने के लिए सेंटर टू विल बी रिलीजिंग फ्रॉम इट्स स्टॉक. So government hopes the measure will ensure adequate domestic availability of rice, wheat and atta. It plans to bring down reserve price of rice by 200 a quintal, which will now be 2900 a quintal. So reserve price means maximum selling price, उसको भी कम करने वाली है सरकार by 200. Okay, what else? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है जिसकी हम बात कर रहे थे कि हाउस पैनल जो है it has told the government to ensure fertilizer availability, increase local production, and ये कौन सी कमिटी है? So the standing committee of parliament on chemicals and fertilizers, ठीक है, in its 2 reports table here on Wednesday in parliament posed questions on the availability of fertilizers and subsidy policies. ठीक है, तो deficiency of almost 1.963 liter for all types of fertilizers in the country, which is worrisome. This is what has been underlined. So such kind of matters can be used in the, let us say, fertilizers and all we are talking about. Means this comes under GS3 economy section, economy syllabus. So there you can use in your recommendations that such kind of by naming the house panel itself has recommended for ensuring a availability of fertilizers in the country considering its deficiency, in order to increase local production. This is how you can use such matters, such stuffs. So China's economy tips into deflation. So deflation देखने को मिल रही है Chinese की economy में, inflation के उल्टा deflation. ठीक है. Finally, world news page. Anything important? 13th amendment की हमने बात की है श्रीलंका में. This is related to the devolution of powers from the central government to the state governments or provincial governments, जो इंडिया बार बार कहता है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट को करना चाहिए. Amazon nations to jointly fight deforestation. Amazon means Amazon जो forest है उसके around जो nations आती है, especially South American nations. 8 South American countries agreed on Tuesday to launch an alliance to fight deforestation in the Amazon, vowing at summit in Brazil to stop the world's biggest rainforest from reaching a point of no return. Fine. So this is the closely was summit of the Amazon Cooperation Treaty Organization adopted what host country Brazil called a new and ambitious shared agenda. तो आपको पता होना चाहिए कि ये न्यू एंड एम्बिशियस शेयर्ड एजेंडा की बात अगर हो रही है न्यूज में तो इसको किसने अडॉप्ट किया है. ठीक है. फाइनली वी हैव लैंडेड ऑन द स्पोर्ट्स पेज. सो दैट्स इट एज फार एज टुडेज हिंदू एनालिसिस इज कंसर्न्ड. नाउ क्विकली लेट अस हैव अ लुक एट द टुडेज क्वेश्चन दैट यू नीड टू अटेम्प्ट फ्रॉम व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. The convention, first statement, the convention on cluster munition is legally binding and India is a signatory to the CCM. Easy question based on our discussion. You can attempt this. And second question for subjective, mains paper is what are small nuclear modular reactors and how can they contribute to the decarbonization? So again, a straightforward question for 10 marks. You need to attempt the same in the 150 words. So that's it. Attempt this. We'll be discussing the same tomorrow in tomorrow's class. Until then, keep revising, take care, and stay tuned for tomorrow's Hindu analysis. Thank you.